Good morning and welcome back, friends, to the Midas Touch Wealth Fundamentals to Wealth Mastery Journey with Vikas Joshi. This is a series in complement to the other two series, friends, the Money Mindset Master with Vikas Joshi and the Golden Whispers, Vikas Joshi Inspires Aspirations. Those two series were dealing with the change of mindset, the basic requirement to reach a financial stability or wealth accumulation. That is wealth mastery. Now, this series is a complement to those two because those two series changed the mindset. Now it was necessity that we move on towards financial stability or wealth mastery. Hence, this series was started. And during the initial sessions, we are dealing with the basics of finance. तो रोजमर्रा की जिंदगी में हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए? That is what is required. That is what I am emphasizing on, preparing a sound base before we proceed further towards wealth mastery. So let us have that terms or that terminology of finance or those concepts of finance which we are aware or you are aware but are ignorant in your daily life. Maybe because you might be busy, maybe you might not have given that type of look or outlook towards those terminology which is required. सोचा ही नहीं था, अरे हमको ये करना चाहिए था, ये तो मुझे पता था, बस मैं उसे सिर्फ उस आपको बता रहा हूं या आपको याद दिला रहा हूं या आई एम जस्ट ब्रशिंग ऑफ the things so that you realize that these terms are the important factors towards your financial stability. My effort is to prepare a sound base along with the growth mindset, which we are in the process addressing every limiting belief. And for the stability or increase in finance, you have to have the clear knowledge. The concept should be very clear on which base we will be growing further towards wealth mastery. That is what we are dealing with. So today's term will be debt management. It is one of the important parts of life, friends. So it is a process where you are strategizing and the repayment of debts owed by yourself और एन ऑर्गेनाइजेशन. आपके खुद के अगर फर्म हो तो आपने कहीं लोन लिया है, किसी से बैंक से लोन लिया है, किसी कंपनी से लिया है, इसे हमको स्ट्रेटेजाइज और रिपेमेंट ऑफ करना है. इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर्ड प्लान टू इफेक्टिवली मैनेज एग्जिस्टिंग डेब्ट्स, रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन्स and ultimately achieve financial stability. The goal of debt management is to regain control over finances, reduce financial stress, improve credit scores, and ultimately achieve financial freedom by eliminating debt burdens. The growth in finance is always in a two-way process. That is, you increase your income, so also you reduce your debts. So अगर इंक्रीज इनकम कर रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेट्स अगर बढ़ रहे तो तुम्हारा रिपेमेंट जा रहा है उस तरफ. हम आमतौर पे जैसे ही एक यंग लड़का, यंग पर्सन, व्हेन ही जॉइंस इन ऑर्गेनाइजेशन और स्टार्ट्स हिज ओन बिजनेस और ही स्टार्ट्स परफॉर्मिंग एज एन एम्प्लॉय ऑफ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ही स्टार्ट्स अर्निंग, देन ही स्टार्ट्स fulfilling his dreams first. Buy a car, buy a TV, buy a scooter, buy a motorcycle on loan. Repayment is through his salary. But he is forgetting that creation of debts is reducing his financial stability. मतलब ये है कि अगर मुझे टीवी लेना है, जो अभी तक मेरे पास था नहीं इतने सालों से, अभी मैंने नौकरी चालू नहीं की तो मैंने एक लोन पे टीवी ले लिया. अब जब तक मेरे घर में टीवी नहीं था तब तक जिंदगी चल ही रही थी, थोड़ी सी परेशानियां थी. अब जैसे ही मुझे नौकरी मिल गई, पहले सैलरी में ही मैंने ईएमआई चालू कर दिया. ओह, रॉन्ग प्लानिंग फ्रेंड्स.
जो जिंदगी आपको आपकी चल रही थी विदाउट द टीवी, यू आर हैविंग अ फाइन लाइफ, यू डिडंट इवन बॉदर, तुमने सोचा था, वो ड्रीम है तुम्हारा, ओके, बट देन प्लान फॉर इट रादर देन गोइंग फॉर द डेट इमीडिएटली। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हैम्पर हो गई, नो डाउट यू विल ओवरकम दैट, बट द लॉसेस आर बिगर। जो टीवी मान लो आपको 100 रुपए में मिल रहा था, आपने उसके ऊपर इंटरेस्ट देके 200 रुपए में खरीदा, व्हाट इज द यूज फॉर योर सेटिस्फैक्शन? वॉज इट योर वांट? नो। ओह, दैट वॉज योर वांट, दैट वॉज नॉट योर नीड। Was it your need? No, it was not your need. It was your want. So dream, it should be planned. So you should assess the debt. That is, कितना लेना है? What is the outstanding debts right now? घर में जो भी है, आपके माँ बाप ने कहीं घर कर्जा लिया है, होम लोन लिया है, उनका कर्जा है, you have to repay those things first. When you analyze where you stand, you will understand how much repayment you have to make. You should be helpful to your family members to grow further. You have to grow together. You cannot have the isolated part. नहीं, मेरा कहना ये है कि isolation is a part and parcel of life. Still, when the family member, father ने अगर घर खरीदा है, आप उसी घर में रह रहे हो, now it is once you are old enough to start generating income, you have to plan your debts and help your family also to grow. Then only you can grow. So you have to prepare the budget. Creating a budget to prioritize the debt payments. पहले तो debt कम कर दो and allocate funds appropriately to meet payment obligations while covering essential living operational expenses. Essential, your needs, not your wants. So first of all, have that budget in place. While you are proceeding for your own business, you might require funds from bank, cash credit, loans, होता है. But then you should be able to negotiate with the creditors. Banks creditors होते हैं, बाहर के लोग होते हैं, प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो आपको फाइनेंस करने के लिए तैयार है. But you should be able to negotiate with the creditors, negotiate more on favorable terms like lowering of interest rate. That is directly hampering you. तो इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम करो, नो डाउट दैट इज गोइंग टू हेल्प यू. अगर डेब्ट्स कम कर रहे हो तो तुम्हारा इनकम वैसे भी जनरेट हो रहा है. एक्सटेंडेड रिपेमेंट पीरियड्स, मतलब अगर एक्सटेंड करो तो ईएमआई कम आएगा विथ लो इंटरेस्ट. सो दैट इज जनरेटिंग सम इनकम फॉर यू. और अगर नहीं करना है, मतलब एक साल के बाद आपके पास पैसा आ गया है, यू कैन नेगोशिएट ऑन द सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट्स. आप भरना चाहते हो वापस. आई एम नॉट स्टेटिंग दैट सेटलमेंट इज ऑन अकाउंट बिकमिंग एनपीए, दैट इज द नॉन रिपेमेंट. नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपके पास पैसा आ गया, एक साल में आपका बिजनेस ने बहुत सारा पैसा जनरेट कर दिया. नाउ यू वांट टू रिपे योर डेब्ट. अभी नहीं चाहिए वो कर्जा, तो नेगोशिएट विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द सेटलमेंट अमाउंट. जब आप वन गो में सारा पैसा भर रहे हो तो यू विल ऑलवेज गेन एन अपर हैंड विद द इंस्टीट्यूशन. यू शुड कंसोलिडेट मल्टीपल डेब्ट्स इनटू वन. मतलब एक बैंक से लिया, दूसरा किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया, किसी पर्सनल लोन से लिया. यू आर पेइंग डिफरेंट इंटरेस्ट एट डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट पीपल. व्हाई नॉट कंसोलिडेट इनटू वन? नेगोशिएट विद वन इंस्टीट्यूशन. Ask the institution to reduce the interest rate so that you get some benefit. You will reduce the liability in this case by forming only one debt. Consolidate them all in one. There are options available. The banker always gives you the option. You can negotiate with them. You can always seek advice from them. That is the financial institution, bankers, CAs, the people who are able to guide you on your finance, financial advisors. You can have a talk with them.
These are the people who will give you advice how to reduce your debts, the amount, how to consolidate them, how to reach a negotiable situation. That you have to have the debt repayment plan prepared on your table on paper. मेरे दिमाग में है, मेरे को मालूम है, अभी तो मैं कर ही रहा था. नहीं 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 नहीं. नाउ एवरी पेनी कॉस्ट फ्रेंड्स. वो तुम्हारा पैसा है. 1 रुपया भी वैल्यू करता है. वो तो मैंने हमेशा कहा है. सो व्हेन यू हैव द प्लान इन प्लेस, तो आपको पता है मंथली एक्सपेंसेस आपके इतने डेप्ट की तरफ जा रहे हैं. दैट इज कॉल्ड डेप्ट मैनेजमेंट. सो मंथली प्लान बना दिया, आपका ईयरली प्लान बन चुका है. अगर आपका डेट 5 इयर्स का है तो आपका 5 इयर्स का प्लान आपके पेपर पे होना चाहिए. द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑलवेज गिव्स यू द फाइनेंशियल प्लान. If you are not taking it, then you are missing out on an important part, friends. Ask them the schedule to have with you, the repayment schedule. तो आपको पता चलेगा आपने अमाउंट कितनी भरी और कितने साल में कैसे रिड्यूस हो रहा है. व्हाट इज द इंटरेस्ट यू आर पेइंग ऑन दैट. दैट इज द कंसर्न. दैट शुड बी द कंसर्न. बिजनेस ऐसे ही करोगे, अगर 1 रुपया भी छोड़ोगे तो वो तुम्हारा नुकसान है. इट इज लॉस. And we cannot allow losses in business. So we have to be particular for every rupee of what we generate for. तो schedule ले लिया. Now we are aware. The repayment plan सब पता है. Now I can negotiate if my business generate more income in certain year. I can approach the financial institution with the plan as I'm having the repayment schedule in hand. I have prepared how much interest I have paid and how much I will be paying if I go for a one go payment. Since I have generated more income, I wish that I should reduce my debt and repay all the debts from the income I have generated from the business, so that once I repay the debt, everything that is remaining with me is the net profit. This applies to your general services also. That is, if you are performing a service for any organization, if you get promotion, if you get some Diwali benefits or all those things where the organizations give perks to the person, that can be used for repayment of your debts. But if you are having the repayment plan in place, then only you will understand what is the benefit, or you can negotiate for the benefit you wish to receive with the financial institution. So every rupee counts, friends. You should have that financial discipline that I have stated in my first session also. The wealth series, that is wealth fundamentals to wealth mastery, itself depends on your financial discipline. That is a basic part. और ये जो हम अभी कर रहे हैं, that is, these are the parts of financial discipline, proceeding towards financial discipline, friends. So you should have the financial discipline. तुम्हारा पैसा है, तुम नहीं केयर करोगे तो कौन करेगा? If you are not worried about your money, nobody else is worried, friends. Nobody else. So you have to take care of your finance. You should have the plan in place. You should have the financial discipline in place. By the financial discipline in mean, you should own the responsibility of your finances. So you should avoid accumulating additional debts and maintaining consistent payments. मतलब एक खत्म हो गया नहीं तो दूसरा लोन ले लिया, अब ये खत्म हो गया तो तीसरा लोन ले लिया, तो पैसा सारा डेट पेमेंट में ही जा रहा है. You are paying more interest on that. I just stated an example with a TV. That is, if you don't have a television, you wish to have a television, you buy it on EMIs. What are you doing? A television which is costing say about it is a rough for the sake of care I am saying it is 100 rupees. By the end of 5 years, that is, you are paying EMI, you will be paying 250 rupees. That is 150 rupees more for the same product. If you are not valuing that 150 rupees, then you are not financially disciplined, because you are not valuing your rupee. You have to understand the difference between needs and wants. Television, this becomes your wants. It is a dream. What is a need?
Needs are those which are necessity for your life, that are necessity for your business. It is required. So you should be very clear in your needs and wants. If you feel that the TV is your need, yes, you should have that expense made, but you should have the planning. That is financial discipline. You should have it in the budget. The budget should be prepared on a yearly basis. It should be broken into monthly basis and worked out. That's how we proceed further. So your income level and stability should be worked out. Now these are the additional opportunities. Create a budget, align the current income, prioritize debt repayments in budget planning only. That is what income level and stability will take you to. The higher interest rate you will have to negotiate, because if at all you are not bothered what that financial institution is charging you, then you are losing on your finance. Then you will be delaying your financial stability. Then you will be delaying your wealth creation. So negotiate on higher interest rate. Yes, they will. Every rupee counts. So the creditors will come across the negotiation table if at all you initiate the things. So if you lower the interest rate, in a way, you are generating some income towards you only. जो आप दे रहे थे लोन के EMI के हिसाब से, आपने इंटरेस्ट रेट कम करके जो भी बचा वो आपका पैसा बचा है. अवॉइड अनप्लान्ड एक्सपेंसेस. मुझे लगा मैंने कर दिया, अरे नहीं ऐसा नहीं करना है. फाइनेंस कैन नॉट बी वर्कड इन दैट वे. इट हैज टू बी प्लान. भगवान भरोसे तो दुनिया भी चलती है, लेकिन ऐसे ही रहोगे तो भगवान भरोसे ही रहोगे तो भगवान भी एक दिन आपको पूछेगा तुमने प्लानिंग क्यों नहीं किया, तुमको तो दिमाग दिया था मैंने. Why didn't you work on your plan? So instead of that, work on your plan, be prepared with the financial plans, be prepared with the things, avoid unplanned expenses. If you want to go have a leisure time, plan it out so that you are aware कितने एक्सपेंसेस हुए और कितना तुम्हारा बच रहा है. वेल्थ मास्टरी तभी तो आएगी. So lack of budgeting or financial planning is always leading to losses. एक बार आपने चलता है एटीट्यूड रख दिया तो वो कभी चेंज नहीं होने वाला फ्रेंड्स, कभी नहीं होगा. चलता है एटीट्यूड इज टू बी रिमूव. फाइनेंस कैन नॉट बी हैव दैट चलता है एटीट्यूड. हाँ रे अभी है, घर में है तो चलना ना, घर में शादी है तो करना पड़ेगा ना. प्लान आउट. शादी जैसी चीज एक दिन में ऐसा नहीं हो देखेगा, आज मैंने देखा कल की शादी कर ली. It is a planning process. If not, then you are in financial losses. चलता है, अभी ऐसे ही होता है, अरे रे ऐसा नहीं होता है. You have to plan it out. The credit management, that is the bills that you are paying. होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, पानी का बिल है. These are the bills which are statutory. गवर्नमेंट ड्यूज वो तो देना पड़ेगा. These have to be planned. The क्रेडिट कार्ड के बैलेंसेस जैसा है, आपने रखना चाहिए. ये हर महीने में मेरा इतना जाने वाला ही है. That is what I mean to say when you are financial planning the things. That is what I am saying when you are saying that credit management process. Now you have to keep your credit card expenses also low. मुझे क्रेडिट प्लानिंग से एकदम याद आ गया कि क्रेडिट कार्ड भी लोग बहुत खर्चा करते हैं. है क्रेडिट कार्ड स्वैप कर दिया, अभी तो ले लिया, अरे वापस भी तो करना है विथ इंटरेस्ट. कैसे करोगे सर? 15 दिन का टाइम होता है. नहीं, यू कैन नॉट हैव. अगर इफ यू हैव दैट अर्जेंसी देन ओनली यू गो फॉर क्रेडिट कार्ड. नहीं तो 15 दिन में क्या चेंज होने वाला है. सो इंस्टेड ऑफ ऑप्टिंग फॉर अ क्रेडिट कार्ड एक्सपेंस जस्ट बिकॉज दे आर गिविंग यू 15 days पीरियड, डोंट गो इन फ्रेंड्स. प्लान इट आउट. जो इस महीने ले रहे तो दूसरे महीने में ले लो तो आपके पास पैसा आने वाला ही है. अदरवाइज यू विल बी पेइंग मोर इंटरेस्ट. क्रेडिट कार्ड इज द कॉस्टलीस्ट पार्ट. डोंट पे इंटरेस्ट अननेसेसरीली.
So that is lack of the education part, financial education. Because unless and until you educate yourself to be secure, to be planned, to be financially disciplined, then you cannot avoid these things. मतलब ये कि अगर फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है तो ऐसे करते ही रहोगे ना. क्रेडिट कार्ड से ले लिया, आज मुझे लगा कि मुझे 5 स्टार होटल में जाके खाना खाना है, खा लिया, घर का खाना फेंक दिया. What are you doing? You are creating an expense for yourself. Unplanned thing. दोस्तों के साथ बाहर खाना खा लिया, घर का खाना फेंक दिया, तो घर में क्यों बनाया? That costing, friends, is a high costing. अंदाजन आपको नहीं आएगा, but when you start planning and budgeting, you will realize these things, whatever I am saying. बाहर खाना खाना है, yes, you have the right to have the leisure activities also, but plan it out. It should not be spontaneous. Spontaneous तभी होगा जब unforeseen circumstances आते हैं. कहीं मेडिकल एक्सपेंसेस आ गए, घर में अचानक माँ की तबीयत खराब हो जाती है, आपको जबरन बाहर खाना पड़ता है. I can understand that, and that is what is called budgeting, and that is what you should consider for these things also. Unforeseen circumstances के लिए आपको फंड बाजू में रखना पड़ेगा ना. Then only you will be successful in financial stability creation or wealth creation. Now, if at all you don't plan, then you are creating a stress for yourself. We will be still waiting कि अरे मेरा अभी पगार जमा नहीं हुआ है, या my business is not yet generating income, because I am expending on one part कि मेरा बिजनेस कल अच्छा चलेगा, लेकिन आज मैंने एक्सपेंस कर दिया. ओह, डोंट डू सच थिंग्स. जब तक पैसा हाथ में नहीं है, खर्चा करना ही नहीं है, सवाल ही नहीं आता खर्चा करने का. अगर करोगे तो फाइनेंशियल स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हो तुम्हारे लिए, बर्डन क्रिएट कर रहे हो तुम्हारे लिए. स्ट्रेस कम्स विथ एन एडिशनल पार्ट कॉल्ड डॉक्टर, मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाना पड़ेगा ना आपको रिलीफ ऑफ स्ट्रेस के लिए. एक्सपेंसेस बढ़ा रहे हो, so unplanned things should be avoided. Now these psychological or emotional parts, they are to be avoided. Emotions should not be mixed up with finance. No, they are the costliest part. Emotional expenses, costliest. उनको पता भी नहीं चलता हमने कितना एक्सपेंस कर दिया सिर्फ इमोशंस की वजह से. नो, फाइनेंस में फाइनेंशियल डिसिप्लिन इज अ मस्ट, डेप्ट मैनेजमेंट इज अ मस्ट, क्रेडिट मैनेजमेंट इज अ मस्ट, is the necessity. So you have to set the goals for debt repayment, acknowledge that debt management is a gradual process and celebrate small achievements along the way. छोटे छोटे लोन जो अगर ले चुके हो अपने धंधे के लिए, रिपेमेंट कर दो, सेलिब्रेट करो, अरे वाह यार इतना तो मैंने रिपेड. दैट इज व्हाट आई मीन टू से, दैट यू विल बी हैप्पी विद द थिंग्स बिकॉज यू आर मैनेजिंग योर डेप्ट, you are perfectly planning your finance, you are perfectly budgeting for everything. Friends, you have to be financially disciplined to be successful in life. Your emotional expenses should not overcome your financial discipline. That should be your goal, or that should be the principle you should follow. In finance, nothing comes in that should not be mixed with any other wants or emotional expenses or some other leisure expenses which are not at all required or which are unplanned expenses. Exception are unforeseen circumstances. So friends, debt management, it becomes the primary part to analyze where your finance is going. And the more you reduce the debt, the more you are generating the income for you. And hence, in the process, you are increasing your wealth creation. Finally, you are moving towards your financial stability. So friends, manage your debts.
Be financially disciplined. I sign off on this note, and we meet again in another episode of the Midas Touch, the series of Wealth Fundamentals to Wealth Mastery, a journey with Vikas Joshi. Till then, bye bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one time activity. Do enjoy.